members, taking into account the allocation of time by the Business Advisory Committee separately for discussion on the said bills, the time for today's combined discussions works out to be about 2.5 hours. However, I suggest that 3 hours may be allotted for the combined discussion. I hope the House agrees. 3 hours allocated. Matters raised with permission. Shri Pramod Tiwari seeks to raise an important issue of hate speech in the country. I am sure your input would generate soothing response, wholesome ecosystem, and rightful consideration. That I always do. Please go ahead. मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में सबको अपनी आस्था के अनुसार धर्म के विश्वास के पालन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, परंतु कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। मैं उसी संदर्भ में मैंने ये प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूं कि इसे दलों से ऊपर उठकर इस संवेदनशील विषय पर हम विचार विमर्श करें। मानवर आईपीसी की धारा 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी की धर्म और आस्था पे प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैं आपको विधि आयोग की लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके अनुसार 2014 में कुल देश में 3 से 23 प्रकरण थे। 2020 में ये बढ़ गए 6 गुना और हो गए 1804। 2022 में 1500 अभी तक हो चुके हैं, अंत तक ये संख्या बढ़नी है। तो मैंने आपके सामने विधि आयोग की रिपोर्ट और इसमें सबसे ज्यादा मुकदमे कायम हुए हैं उत्तर प्रदेश। मानवर मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया। और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आजादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है दंगे, फसाद, उत्तेजना, और जो बात मैंने कही मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्यसभा का या सरकार का दायित्व क्या है? वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो Siri, you need some more time? Okay, 1 minute more. जैसे हो रही है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही, तो मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और खास तौर से जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेस पे, और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले, बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चले। मानस
Ranjan, Mangraj, demand for completion of coastal highway projects in Odisha. Honorable Chairman, sir, Odisha has a coastline of about 480 km, which makes the infrastructural development of the coastal districts all the more important for the economy of the region. The central government announced a coastal highway project spanning 346 km in 2015, connecting 7 coastal districts of Odisha. The project would have proved to be an important development in terms of promotion of trade, tourism, communication, and industry. However, there have been undefined delays in the development of the project. It comprised two parts, sir. One connecting Rameswar to Ratanpur and the other one connecting Ratanpur to Digha. It was to be developed under the 4 packages. Initially, the first 2 packages were cancelled without any defined reason on the part of the central government. After the clearance for the 2 packages, the project was stalled due to unavailability of environmental clearance from the Environment Ministry. However, the clearance for the same has been provided since August 2023. But there has been no headway made in the project yet by the central government. Thus, sir, through you, I would like to urge the central government to come up with a detailed project report, TPR, highlighting the status of implementation of the project. The central government needs to work towards completion of the Central Coastal Highway project as soon as possible, because 8 years have already passed since the announcement of the same and no significant development has been made as of now. Thank you, sir. धन्यवाद मानस रंजन जी. माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी need to address the problem of preparing Aadhaar card for differently abled citizens. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है. दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आंखों के न होने के कारण आधार कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाएं जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई, उनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है. वर्तमान में हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है. परंतु देश के कोने कोने में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की पहुंच इन महानगरों तक नहीं है. इसलिए दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजन आज भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं. कुछ दिव्यांग भाई बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं. माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में समय समय पर देश के सामाजिक लोगों के द्वारा मांग की जाती रही है कि सरकार द्वारा इन दिव्यांग नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान के जरिए इनके आधार कार्ड बनाए जाना चाहिए, ताकि मेरे इन गरीब भाई और बहनों के विकास की इस बहती धारा से वंचित न होना पड़े. इसलिए सरकार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को इन दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष तकनीकी विकसित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए, ताकि उनके आधार कार्ड बनवाने में आसानी हो सके. नई तकनीकी विकसित करने से मेरे इन भाइयों और बहनों को बायोमेट्रिक या अन्य माध्यम से मिलने वाली सरकारी सहायता लेने में भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनको रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी निजात मिलेगी. माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि देश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर इन दिव्यांग भाइयों और बहनों की पहचान की जाए और उनके आधार कार्ड विशिष्ट प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा विशेष तकनीकी के माध्यम से बनाए जाना चाहिए. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजनों के प्रति एक विशेष स्नेह है, इसलिए उन्होंने 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है. माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जिन दिव्यांग नागरिकों के हाथ के अंगूठे, उंगलियां तथा आंखों में किसी प्रकार का विकार होने के कारण या किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाने के लिए
सरल विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी। Now Dr. K. Lakshman, need to protect ancient monuments and archaeological sites at the holy shrine Tirumala. Please. Thank you, sir. Sir, Bharat is the oldest living civilization in the world. Indian culture and traditions are closely linked to Sanatana Dharma, whose edifice is the plethora of temples and monuments across the nook and corner of India. Tirumala is supposed to be the world's largest holy and spiritual place covered by 7 hills, which consists of ancient monuments, temples, and mandapas constructed during the regime of Chola, Pallava, Vijayanagaram, and Yadava kings. But recently, unfortunately, the TTD demolished this ancient Parveta Mandapa at Tirumala, which was in existence for more than 800 years, and constructed a new modern Mandapa with a new dressed granites. TTD is also trying to demolish Padala Mandapam at Alipiri in Tirupati, sir. Instead of demolishing such monument structures, age-old, which has got the historical, spiritual, and archaeological authenticity, in consultance with opinion taken from ASI, I urge the concerned authorities to view the matter very seriously. Because the devotees of this Venkateswara Swami, Lord Venkateswara temple, are not only from Andhra Pradesh alone, and throughout the country, thousands of devotees, they come and they pay these things, sir. And unfortunately, this historical and cultural traditional importance of these ancient temples in and around Tirumala and Tirupati of national importance rather than regional importance, they are being now diverted also. Even the funds of TTT are also being diverted to the local Tirupati municipality. This being a year of election year, now the funds of the devotees which have donated the funds for expansion of Sanatan Dharma or even development of the temple, but these funds are being diverted, sir. I urge the concerned authority and the government to do the matter seriously, because the feelings of the devotees and the feelings of the Sanatan Dharma people are being hurt. Thank you very much, sir. धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी। माननीय डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, कंसर्न ओवर वैंडलिज्म एट सरहिंद रेलवे स्टेशन। धन्यवाद महोदय, आज आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं आज सदन के सामने एक संवेदनशील मुद्दा रखना चाहूंगा जो हमारी देश की लाइफलाइन रेलवे से जुड़ा हुआ है। मैं पंजाब से आता हूं और पिछले महीने पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने ट्रेन कैंसिल होने पर, अचानक कैंसिल होने पर पथराव किया और स्टेशन को भी डैमेज किया। ये समस्या सिर्फ पंजाब की ही नहीं है। कुछ दिन पहले सूरत में, गुजरात में भी स्टैम्पीड हुआ क्योंकि वहां ओवर क्राउडिंग था। और ऐसी बहुत सी घटनाएं भी देखी गई जब वंदे मातरम पर या बाकी और ट्रेनों पर पथराव किया गया। तो ये विषय चिंताजनक है और रेलवे की और यात्रियों की सेफ्टी को कंप्रोमाइज करता है और इससे रेल हादसा बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। यदि आंकड़ों में देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में 1360 करोड़ की रेलवे की संपत्ति का इस तरीके से नुकसान हुआ है। अब हम जब इसके कारणों पर जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो समझ आता है कि रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों में गुस्सा आता है और वो इस तरीके से निकलता है। हालांकि गलत है, पर इस तरीके से निकलता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए 1916 में दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया, लेकिन इस कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां कहीं उड़ती हैं तो वो रेलवे स्टेशन पर उड़ती हैं। हमारे कितने रेलवे स्टेशन हैं? हजारों रेलवे स्टेशन में कितने मुट्ठी भर रेलवे स्टेशन होंगे जो डिसेबल्ड फ्रेंडली होंगे। लिफ्ट की सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं है, वेटिंग रूम की सुविधाएं नहीं है और कई बार ट्रेन या तो आगे रुक जाती है, पीछे रुक जाती है और जो यात्री पैनिक में चढ़ते हैं और उससे भी हादसे की संभावना बढ़ती है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, ट्रेन लेट भी होंगी
और भी समस्याएं आएंगी, तो उसमें हम क्या सुविधाएं यात्रियों को देने जा रहे हैं। इन सब बढ़ते हुए केसेस और कम फैसिलिटीज के लिए मैं सभी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी बनाएं, ताकि हम तोड़फोड़ ऐसी और घटनाओं को रोक सके। और महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीडेवलपमेंट प्लान चल रहा है, अपग्रेडेशन प्लान चल रहा है रेलवे स्टेशन का, तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशन इस प्लान में शामिल किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुकुमार मित्तल जी। नाउ ऑनरेबल श्रीमती वंदना चौहान need to address challenges of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana program. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to raise a very important question. So the Ayushman Bharat, the PMJ, is a flagship program of the government. This noble initiative, sir, strives to give a comprehensive health coverage to the poor and vulnerable. But in spite of 5 years, sir, from the starting of the program, there still suffers several challenges which this entire Yojana faces. Low level of awareness, uneven distribution of empaneled hospitals, shortage of healthcare infrastructure and equipment, shortage of doctors and other human resources. So the empaneled private hospitals also have certain issues which they voice to many of us Member of Parliament. Reimbursements, delay in payments, complaints of low package rates and cumbersome process and procedures. Some very, very serious issues, sir, regarding the implementation have come to the fore after a CAG report on the performance audit of the Ayushman Bharat Yojana was made. According to this report, sir, not only are there invalid names, unrealistic date of births of lakhs of beneficiaries, but issuance of duplicate PMJ IDs, ineligible households which have got registered as beneficiaries, to whom crores of money, sir, has already gone from the government coffers. So in addition, the report reveals that the benefit of the scheme has got extended to people who are dead, shown to have availed treatment after such death. Patients shown as admitted in multiple hospitals at one given time. Cases where surgeries were shown after discharge. Dates showing discharge before admission. And all these numbers, sir, run in thousands, if not lakhs, resulting in expenditure of several hundred crores, sir. Further, sir, shockingly, the report reveals that in all, as many as 9.85 lakh beneficiaries have been linked to the same mobile numbers which don't exist at all. All this, sir, resulting in crores of money being disbursed in contravention of the guidelines. The report also points out that some of the empaneled healthcare centers neither fulfill the minimum criteria of support system and infrastructure, nor conform to the quality standard criteria. In several, the mandatory compliances criteria as to fire safety measures, biomedical waste management, pollution control, even hospital registration certificates, sir, have not been followed. However noble the intention of this scheme, sir, PMJY is suffering from glaring irregularities and need to be amended at the earliest, or else this would tantamount to playing with the lives of the poor. Thank you, sir. Thank you, Vandana ji. Honorable Sri Iran Kadadi demand to organize a national level program on Kittur Rani Chennamma. ಧನ್ಯವಾದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮಹೋದಯ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎದುರು 1824ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥ್ಯಾಕ್ರೆಯ ಹತ್ಯೆಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಅವರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ದತ್ತಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ವೀರ ವನಿತೆಯವಳು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ತದನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ
ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಾರಿ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸೈನ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಉತ್ಸವ ನಂತರ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ಈಗ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಗತವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1824ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು 2024ಕ್ಕೆ ಅದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಆ 200ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 200ನೇ ಉತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. धन्यवाद माननीय श्री किरण कडाडी जी. Now श्री Honorable Joseph K. Mani, concern regarding rising coastal erosion along shores of Kerala. Thank you, sir. It is a matter of grave concern that requires immediate attention. The alarming increase in the coastal area of India, particularly along the shore of Kerala. This issue not only a threat to the environment, but also to the livelihood of coastal communities. In India, about 7,560 kilometers of coastal line, and in Kerala, about 590 kilometers stretch of coastal line starting from Puva to Trivandrum to Talappadi in Kasaragod, and is one of the most densely populated land area in the country. According to the study by the National Center for Coastal Research, 33.6% of the Indian coastal line is vulnerable to erosion, and nearly 46% of Kerala's coastline is already affected. The statistics should not be viewed as a mere number, but warning of the impending crisis that looms of the state and nation. This coastal erosion is due to various factors such as climate change, unregulated human activities, inadequate coastal zone management, mining, and tourism. In Kerala alone, with over 11 lakh fishermen belonging to the economically weaker section, coastal erosion is rendering these families refugees in their own land. It is imperative that we recognize the urgency of the situation. Firstly, I implore the government to initiate a comprehensive coastal protection plan that leverages the latest scientific and technical advancements. Adequate financial allocation is crucial. The government must reflect its commitment in budgets, setting aside sufficient fund for coastal protection projects, community development initiatives, and research programs. There is a pressing need for comprehensive scientific study into the issue of coastal erosion along the Indian coast. Such a study will offer a detailed understanding of the regional variations, enabling the identification of high-risk zones and implementation of targeted measures for coastal protection. Sir, additionally, it will facilitate the integration of indigenous knowledge with advanced scientific insight, fostering a holistic approach. This comprehensive study stands as a crucial step towards preserving our coastal heritage, sustaining the livelihood, for fortifying the resilience of our coastal communities in the face of escalating environment challenges. I hope the government will take
immediate action and address the crisis. Thank you, Jose K. Mani ji. Mani Sri Sadanand Seth Tanawade, regularization of local passenger train number 7380 and 7379. Thank you, Chairman, sir. I beg to call the attention of the Minister of Railways to an important issue affecting the residents of Kolem, Kale, and surrounding village in South Goa. The prolonged cancellation of local passenger trains, specifically train number 07380 Vasco to Kolem and train number 07379 Kolem to Vasco, due to ongoing railway doubling project from Kolem to Vasco, has created severe challenges for the local population. The suspension of these trains has disproportionately impacted the daily lives of villagers, particularly students who rely on these services for commuting to educational institutions and employment opportunities. Despite persistent representation made by the local villagers to the Southwestern Railways, a resolution has not been reached. The absence of alternative transportation from Kolem to Vasco has led to significant hardship for students, workers, employees, and domestic passengers. While good trains operate seamlessly on the same route, sir, I urgently request your intervention to address this matter. I appeal for the regularization of train number 07380 Vasco to Kolem and train number 07379 Kolem to Vasco without further delay. Thank you, sir. धन्यवाद श्री सदानंद तनावड़े जी. Honorable Srimati Geeta Elias Chandraprabha, demand to establish industrial units in Aurora and Etawah districts of UP. धन्यवाद महोदय. उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया एवं इटावा भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. लगभग उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित इन स्थानों से मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों की सीमा बिल्कुल निकट है तथा उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में स्थानों पर सरलता से पहुंचा जा सकता है. दोनों जनपद देश के प्रमुख रेल मार्ग से एक हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से अनेकों एक्सप्रेसों से अच्छी तरह से जुड़े हैं. जनपद औरैया में भारत सरकार के उपक्रम गेल एवं एनटीपीसी भी स्थित है. महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान पर स्थित होने तथा रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्ट होने के कारण इन दोनों जनपदों में अभी औद्योगिक विकास की अनेकों संभावनाएं हैं. दोनों जनपदों की औसत साक्षरता दर देश और प्रदेश की औसत साक्षरता दर से अधिक है. रोजगार के अवसर कम होने के कारण वहां के प्रतिभाशाली युवा अनेकों शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं. अतः दोनों जनपदों एवं आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जनपद के संपूर्ण विकास के लिए या एक्सप्रेस एवं रेल मार्ग के किनारे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अति आवश्यक है. अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि वहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर वहां के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय चंद्रप्रभा जी. माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, डिमांड फॉर फ्लाईओवर ऑन NH31 इन बेगूसराय. उपसभापति महोदय, यह मांग जो नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और राकेश जी प्लीज स्पीक ऑन द टॉप. में मोदी सरकार ने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया है जो एक अभूतपूर्व है और देश के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है. इस संदर्भ में बिहार के बेगूसराय में जो नेशनल हाईवे 31 गुजर रहा है उसमें एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो फ्लाईओवर एक ट्रैफिक चौक तक ही आता है. यदि उसे खातोपुर यानी कुछ मीटर्स आगे बढ़ा दिया जाए तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम हो जाएंगी जो आशंका जताई जा रही है. दूसरा, उसी NH31 पर बलिया में पावर हाउस से यदि जानीपुर तक एक फ्लाईओवर बनाया जाता है तो लोग सुरक्षित रहेंगे. यह इस संदर्भ में मैं उठा रहा हूं कि पैदल चलने वालों का एक प्राकृतिक और मौलिक अधिकार होता है. जब नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है तो उन स्थानों पर
छोटे छोटे व्यापारी, फल विक्रेता और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहले से स्थित होता है। उसके कारण जो आंकड़े आते हैं, जितने पैदल चलने वाले लोग होते हैं उसमें 31% व्यावसायिक कारणों से चलते हैं, और जो रोड पर एक्सीडेंट्स हो रहा है उसमें 58% एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं पैदल चलने वालों का हो रहा है। भारत में ये आंकड़ा लगभग 32,825 है 2022 का, और ये ग्लोबल ट्रेंड है। पूरी दुनिया में 1.2 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं। अमेरिका में 2022 में 7,500 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो 77% की वृद्धि है 2010 की तुलना में। भारत में भी यह वृद्धि लगातार हो रही है। इस संदर्भ में मैं मांग करता हूं कि इन 2 फ्लाईओवर की मांग करते हुए मैं एक सामान्य संदर्भ में कहता हूं, जहां भी सड़क का चौड़ीकरण हो, विस्तारीकरण हो, वहां स्थानीयता को सुरक्षित रखा जाए। यानी स्थानीय लोग जो पैदल यात्रा करते हैं, कन्वेंशनल तरीकों से चलते हैं, बैलगाड़ी, टमटम या घोड़ा गाड़ी, उनके अधिकारों को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चूंकि नेशनल हाईवे बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, इसमें स्थानीय लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि बेगूसराय NH31 पर वह जो पावर हाउस खातोपुर तक ले जाया जाए फ्लाईओवर को, और दूसरा फ्लाईओवर बेगूसराय की बलिया में पावर हाउस से लेकर जानीपुर तक बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राकेश जी। डॉक्टर प्रशांत नंदा, request to start medical coach facility for serious patients in trains. Thank you, sir. Through you, I would like to draw the kind attention of Minister of Railways. And I'm talking about the trains running more than 18 hours from one to the end. सर, इसके बारे में ज़्यादा बोलने से पहला तो ये मैं बता दूं, मेरा एक पहला अनुभव है। While I was coming to Delhi by राजधानी, कानपुर जब पास हो गया, then there is only one stoppage, that is at Delhi. So क्या हुआ, एक 38 years का लड़का, उसको स्ट्रोक आया तभी, और we could find out a doctor from there, but he couldn't help. बोला एक अगर ऑक्सीजन होता तो मैं इसको जिंदा रखता। लेकिन आपको सुन के ये खराब लगा होगा, मुझे भी बहुत ही खराब लगा कि उस 38 इयर्स का जो युवक है उसने दम तोड़ दिया। खाली यही एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कोरोना के बाद almost all the children, they are prone to deficiency of oxygen. अब जब ट्रेन में जा रहे हैं, उनके माँ बाप भी जानते हैं इसको नेबुलाइजर की जरूरत है, और नेबुलाइजर लेके भी आते हैं, लेकिन वो नेबुलाइजर काम नहीं करता है, क्योंकि 110 DC में जो करंट आता है बगी में, वो नेबुलाइजर उधर काम नहीं करता है। उसके बाद ये भी होता है, ये ज़्यादा करके कोरोना के बाद ये होता है कि इमीडिएटली सोडियम डेफिशिएंसी हो जाता है, और उसको एक सलाइन की ज़रूरत है तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन वो सलाइन वो पाने से पहले वो दम घुटता है। तो थ्रू यू आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑनरेबल railway minister, who is also very much concerned about the passengers, and he will definitely take this note and will do something, that all these trains which are running for more than 18 hours should have a special coach medical van, where there should be at least 2 ICU, 1 ventilator, and oxygen, and other things, along with the doctor and nurses. I think this will be accepted by all my members, learned members, which is very, very necessary, and it is high time for us to think about it. And I hope the way the railway minister is working, he will definitely take note of this particular request of mine. Thank you. Thank you. Time. जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली दे सेंड देयर नेम ऑन द टेबल प्लीज।
Srimati Ranjit Ranjan, concern over negative impact of cinema on our youth. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से, जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे, सभापति जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ, या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है, और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहां तक अर्जन वैली का सवाल है सभापति जी, हरि सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ थे सिख फौज के, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका बेटा था अर्जन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरात से, वो जब पूरा इंडिया हमारा एक साथ था, और उन्होंने कई मुसलमानों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को आप एक गैंगवार में, आप उस गाने को बैकग्राउंड में दिखा के, जो हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस करवाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उन डाडी फोक, एक डाडी फोक होता है जिसके तहत आप एक फोक सॉन्ग के तहत अपनी फौज को जोश पैदा करते हैं। सर, मेरा एक ही सवाल है, 30 सेकंड, माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर, थैंक यू सर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है, और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है? ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। माननीय श्री विवेक के तनखा, कंसर्न ओवर शॉर्टेज ऑफ इमरजेंसी बेड्स इन एम्स दिल्ली। सर, मैं आपकी परमिशन से पब्लिक हेल्थ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। एम्स एक ऐसा अस्पताल है जिसके प्रति लोगों की बहुत आस्था है, और दूर दूर से पेशेंट्स जो पीड़ा में रहते हैं एम्स आते हैं, क्योंकि इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्योंकि इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल वेरी एक्सपेंसिव, वेदांता जाना या कहीं भी जाना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट्स भेजता हूं, क्योंकि मैं मेडिकल मिशन से बहुत कनेक्टेड हूं, और मैं देखता हूं कि रोज करीब 250 लोग एम्स की इमरजेंसी में जाते हैं, एंड दीज आर ऑल वेरी सिक पीपल, मतलब काफी बीमार होते हैं तभी आदमी एम्स जाएगा, और उसमें से मुश्किल से 82 बेड्स आर अवेलेबल फॉर इमरजेंसी। 150 आदमी जो हु इज वेरी वेरी सीरियस इज आउटसाइड विद हिज फैमिलीज। मेरे को लगता है कि इट्स टाइम हैज कम कि हमको सोचना चाहिए एम्स की फैसिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि आप इसको रोक नहीं पाओगे। ये पब्लिक एक्सपेक्टेशन है पब्लिक हेल्थ की। नंबर 2, फैसिलिटी बढ़ाने के बाद मेक एन एफर्ट कि इन पेशेंट्स को क्या हम कहीं और भेज सकते हैं फॉर द सेम ट्रीटमेंट।
उसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट को एक्टिवली करनी चाहिए। दो बातें और, आपने ऑनलाइन फैसिलिटी रखी है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इमरजेंसी। अब ऑनलाइन में आप जो सीरियसनेस है वो उतनी बता नहीं सकते, तो डॉक्टर्स को भी एकदम से आभास नहीं होता कि इन सब ऑनलाइन पेशेंट्स में जो 250 हैं उसमें से किसको सेलेक्ट करें। दे हैव टू सी देम। सो इट इज वेरी डीह्यूमनाइजिंग। मतलब वहां जाते हैं all serious patients, and especially after COVID, जब heart attacks have become so common, and for young people also, sir, there for more than 5,000 young people have died of a heart attack. तो मेरा ये कहना है कि somewhere we'll have to dehumanize this whole process, make it people friendly, facilities मिल जाएं। और last, एम्स के डॉक्टर्स आर द बेस्ट इन इंडिया सर। इनकी बहुत डिमांड है सब अस्पतालों में। जब ये रिटायर होते हैं या इवन बिफोर रिटायरमेंट, एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल वांट्स टू टेक देम ऑन बिग पैकेज। इनका रिटायरमेंट एज 65 से 70 के लिए प्रपोजल बहुत दिन से पीएमओ में पेंडिंग है। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि उसको बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। थैंक यू सर। थैंक यू श्री विवेक तनखा जी। Honorable Dr. Kanimoji NVN Somo, concern over continuing harassment due to spam calls and SMS despite TRAI regulations. Thank you, Chairman, sir. So the Telecom Regulatory Authority of India has developed the National Do Not Call Register in India in 2007. In spite of the TRAI regulation, there has been an increase of spam phone calls and SMS on a massive scale. The government's role in regulating measures to curb these calls has not been effective. Usually, these types of calls come between 2 to 5 when the old people are sleeping at home. It wakes up as an alarm for them and they really get disturbed. The issues of this unregistered telemakers is rampant and unyielding. Around 75% of the people registered in the regulators of TRAI's Do Not Disturb DND list receive unwanted SMS, which is evident from many studies. Out of which 9,252 people who responded to the poll, 51 stated that they received calls relating to selling financial services, and 29 said they received calls relating to selling real estate, including credit card solicitation. Access to all these customer contacts is a basic breach of privacy. There is a pressing need to have a preventive framework other than just filing complaints through the TRAI. I urge the Telecom Department to take immediate action to the following: to curb the unsolicited calls and SMS in spite of TRAI regulations or DND registration, to manage the operations of unregistered telemarketers after introducing blockchain-based technology, steps taken to address existing errors and complaints mechanism of TRAI. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, requesting to conduct the rescue operation and demand for financial assistance to cyclone-affected farmers and other victims. Thank you, Chairman, sir. I may be permitted to speak in Telugu. I have already given. Please. Sir, Andhra Pradesh lo మిగ్జామ్ తుఫాను వల్ల దాదాపు శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి చిత్తూరు జిల్లా వరకు జరిగిన నష్టం 7,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నది. భారీగా వర్షాలు, విపరీతమైన గాలుల వల్ల మొత్తం పంట అంతా దాదాపు 1,000 ఎకరాలలో ఉద్యాన పంటలు, ఇతర పంటలు కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఏలూరు, అనకాపల్లి, బాపట్ల, అల్లూరు సీతారామరాజు, గుంటూరు, పల్నాడు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఇతర జిల్లాల్లో మొత్తం భారీ వర్షాలు కురవటం వలన పూర్తిగా పంటలు డ్యామేజ్ అయినాయి. ఈ డ్యామేజ్ అయిన సుమారు వీటన్నిటిని డ్యామేజ్ని పట్టించుకోవటం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందించడానికి విజ్ఞప్తి చేయటమైంది. ఎందుకంటే ప్రాథమికంగా కనీసం 2,500 కోట్లు రైతులకు విడుదల చేసి పరిహారాన్ని చెల్లించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సౌకర్యాలు, ఎటువంటి రిహాబిలిటేషన్ సౌకర్యాలు కూడా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అక్కడ ఏమీ చేపట్టడం లేదు. దానివల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బందికి గురి అవుతున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళకి కావలసినటువంటి భోజన సదుపాయాలు, ఇతర సదుపాయాలు కూడా లేక తుఫాను బాధితులు కకావికలం అవుతున్నారు. అయినా ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి సహాయం కూడా ఈ రోజుకు కూడా
తుఫాను బాధితులకు అందలేదు. రైతులు అందరూ కూడా పంట తీవ్రంగా నష్టపోయి పరిహారం అందక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోక ఎటువంటి పునరావాస కేంద్రాలు నెలకొల్పక పూర్తిగా నష్టపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చాలా దీనావస్థలో ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితులను కనుక చూసిన తరువాత ఇదే పరిస్థితి కనుక కనుసున్నైతే కనీసం రేపు పొద్దున ఉండటానికి ఇళ్ళు కూడా లేవు. దెబ్బతిన్న ఇళ్ళకి ఆఖరికి పశువులకు మేత కూడా ఇవ్వకుండా పూర్తిగా నష్టం జరుగుతున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుని ప్రత్యేకమైన జీవోలు ఇచ్చి ప్రత్యేక సహాయం చేయవలసి ఉంది. గతంలో హుదూద్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు, తిత్లీ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పరిహారాలను కూడా ఈ రోజు కూడా అందజేయలేదు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సరిచేసి పరిహారం ఇచ్చి వెంటనే of this government and of the society. Sir, the NCRB report reveals a disturbing truth of 13% rise the atrocities on Dalits in 1 year. Sir, they are also called as Hindus, and the society says all Hindus are one, but the statistics reveal that in 2020, 50,291 atrocities have taken place on Dalits. 2021, 50,900, which is increased. 2022, it is 57,582. This increasing trend shows that how we are treating our own fellow brothers in this country. Sir, the top 3 states are UP, 15,368 incidents, Rajasthan 8,752, Madhya Pradesh 7,733. These are all the top 3 states, and no state is going behind on this issue, sir. Sir, the women are the worst hit in this. Among the leads, the women are the vulnerable, and they succumb to the atrocities like rape, naked parade, destroying their self-respect and modesty. And there also, sir, the statistics says in 2021, 3,893 rapes have been done. In 22, that rapes have been increased to 4,252, sir. Sir, the sexual harassment on Dalit women in 2021, it is 932, and in 22, it is 1,022. Sir, assaulting on their self-respect, cases reported in 2021 is 2,000, and in 22, it is 2,167. Totally, 7,756 women in 2021, and sir, the latest 343 naked parade was done on the women of these countries. Sir, this is really, even today, sir, I read the paper. It is reported in Tirunelveli district, a scheduled caste boy was murdered because he had a love with an upper caste girl. It is not his mistake, but it is called by the press and other media as Maryada Hatya. This Maryada Hatya is going on across the country. Thank you, Ramanji. Manya Sri Harnath Singh Yadav need to impose uniform civil code in the country to maintain communal harmony. Manya Harnath Singh Yadav उपस्थित नहीं है. माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास need to end deaths due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. Submission is need to end death due to hazardous cleaning of sewers and septic tanks.
So recently, 4 migrant workers from Bihar died while cleaning a septic tank in Surat, Gujarat. The union government has stated that have been no deaths due to manual scavenging in the country. However, the government's own data states that over 300 people have died in the last 5 years due to accidents while undertaking hazardous cleaning of sewers and septic tanks. Manual scavenging has been prohibited in India since 2013. However, the Dalits and the tribals are forced to take up these jobs mainly due to poverty and lack of employment elsewhere. The historical repression and marginalization of these groups still exists, leaving them no other resource to earn a living. The government needs to take urgent measures to ensure that no person should have to demean themselves by cleaning sewers and septic tanks manually. The law should be enforced strictly in this regard, especially for private firms who employ such persons on a per diem basis, so it does not show on their rolls, often without providing any protective gear. The technological solutions need to be enhanced, and mechanical desludging and use of robots needs to become the norm. The self-employment scheme of rehabilitation of manual scavengers need to be revived. And besides the one-time cash component, emphasis needs to be put on skilling and providing soft loans to enable them to carve out an alternative means of earning livelihood or other careers. We must ensure dignity of life and livelihood for every Indian citizen. Thank you, sir. Sri Anil Prasad Hegde. Thank you, Chairman, sir. I want to speak on an important issue of demanding prohibiting the use of all bannable pesticides immediately by prohibiting its production, import, export, and marketing and use of in India. Sir, there are enough research reports about the havoc being caused by herbicides world over. The issue is much bigger, in fact. India continues to have nearly 150 pesticides that have been banned or disallowed in one or more countries elsewhere. There is large body of scientific evidence both on the ill effects of synthetic pesticides as well as about positive impacts of organic and natural farming, sir. I welcome the Prime Minister urging farmers to give up toxic chemicals and save the Mother Earth. But it is unfortunate that deadly chemicals like monocrotophos, etc., are not being banned by the Minister of Agriculture. So in May 2020, Government of India published a draft ban order on 27 hazardous pesticides. That too, after consulting the pesticides. Okay. Question number 46. Sri Syed Nasir Hussain. Not present. Honorable Minister. Dr. John Britas. So my mic. Even while appreciating the engagements of Honorable External Affairs Minister and other ministers, I have a question which is concerning the interest of India. There has been numerous reports in the media that an Indian official has been implicated by the US authorities on account of an alleged attempt to kill a US citizen. And it has been widely reported that Indian government is applying its mind and seeing the inputs of the US government, the basis for an inquiry. On the other count, there has been reports about India rebutting the stand of the Canadian government. Is it a fact that we are not having an equitable treatment? And what is the status of the charges and allegations raised by the US authority? Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, the matter is not directly connected to the question, which is on the visits of union ministers. But nevertheless, since it has been asked, sir, through you, I would like to clarify to the honorable member that insofar as the US is concerned,
certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. Shri Sujit Kumar. Sir, between January 2020 and November 23, 220 foreign visits have been made by various union ministers. And these visits have substantially helped India standing in the globe. But sir, out of these 220 visits, only 6 visits have been made to Latin American countries. Brazil in May 22, and then Panama, Colombia, Guyana, and Dominican Republic in April 23, and then Uruguay, Brazil in June 23. So why, sir, this important part of the globe is being neglected, particularly when China is making such deep inroads in Latin America? And I think we have much affinity and similarities between Latin America and India. So I think the Honorable Minister, I would like to hear from him what needs to be done to enhance this. Honorable Minister. Sir, I thank the Honorable Minister through you for the interest he has taken on Latin America. I would like to say that the visits he referred to are actually visits I have myself undertaken. In many cases, not the first ever visit by any foreign minister to Colombia, to Guyana, to the Dominican Republic, and to Panama. I would like to assure the honorable member, sir, that government actually is very committed to developing our ties. One of the reasons why there have not been that many visits is obviously a matter of distance. But having said that, today our trade with Latin America is nearing $50 billion. We have a very significant flow of people there. There is a lot of services trade which is taking place in Latin America. We have also designated special conclaves for which Latin American delegations come here. So I would certainly be confident that we will see many more visits to Latin America, not just by me, but by my other ministerial colleagues as well. Other ministers and constitutional functionaries. Certainly, sir. There was slight murmur because you addressed the honorable member as minister. Oh. But you are known to turn out prophetic. Shri Saket Gokhale. Thank you so much, sir, for the opportunity. On this question of foreign visits by union ministers, there is one question I would like to ask of the Honorable Minister through you, which is, on their foreign visits from 2020 till date, have any union ministers during their foreign visit attended events organized or meetings held by an organization called the Overseas Friends of the BJP, which is a unit of supporters of the Bharatiya Janata Party in different countries? So have any ministers attended events of the Overseas Friends of BJP? And if yes, on what grounds did they attend this event on an official foreign visit? Thank you, sir. Honorable Minister. I am very confident that many ministers would have attended such functions. I have myself done so. And the reason why we have done so is when we go abroad, we meet members of the Indian community. It is part of our tradition. The Modi government values the Indian diaspora. We know that they make an enormous contribution to the image and to the profile that India has today. We treat all members of the community with respect, and if members of the community happen to belong to political parties or have political affiliations, that is a fact of life. But the primary purpose for which ministers go is official business.
ministers discharged their official responsibility fully, satisfactorily, and it is visible in the results of the foreign policy. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय धन्यवाद। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्रियों का दुनिया के अनेक देशों में जो लगातार दौरा हो रहा है, उसमें खास करके ऐसे छोटे देश जो अब तक उपेक्षित थे, जैसे मंगोलिया हो गया, वियतनाम हो गया, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दौरा किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दौरों से जो सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए खास करके वियतनाम और मंगोलिया में क्या प्रयास किया जा रहा है? Honorable Minister. Sir, during the visits which have been undertaken by the Prime Minister and by members of Cabinet, just as I said, the Indian community is an important pillar of the relationship. Building our cultural and civilizational linkages with these countries is also very important. What the honorable member specifically referred to, sir, Mongolia and Vietnam, I would like to inform the House through you that where Mongolia is concerned, we have actually undertaken a very extensive project of digitizing manuscripts and providing support to one of the leading monasteries. Where Vietnam is concerned, there is actually a very significant archaeological site going back to the Champa period. Sir, this is a era about which, as you know, Jaishankar Prasad has written as well. So in the Champa period, there is a site called Mison, there are ancient Shaivite temples there, and we are very proud that the Archaeological Survey of India has contributed to the renovation and the restoration of heritage at the Mison temple complex. And this is greatly valued because it has now become a very major tourist site. There are many other countries, sir, where cultural and civilizational connects are built through our cooperation. Shri M. Thambidurai. Chairman, sir, through you, I want to know from the Honorable Minister, because so many visits took place to Sri Lanka, then what is the efforts taken by the outside to solve the Tamil Nadu fishermen? Often Sri Lankan Navy is harassing them. And also, to protect the Sri Lankan Tamils, constitutional amendment is still pending. Whether the government, the Indian government, our people were visited to take care of that, solve this problem. I want to know through you, sir. Honorable Minister. Sir, the House would be aware that a lot of the fishermen's issues arise from agreements and understandings which were reached in the 1970s. Insofar as the constitutional issue is concerned, the rights of the Tamil-speaking people in Sri Lanka, this was a matter of an agreement which we had between the two countries in 1987. Our endeavor today is to see that our fishermen are allowed to fish, do their occupation in the areas of our jurisdiction in a peaceful manner. And wherever there are any frictions, to resolve that friction, because often, sir, boats are seized and fishermen are detained. So we make sure that these detentions are not long, and if there is any misunderstanding, to solve it. Insofar as the constitutional issue is concerned, sir, we have been continuously supportive of the implementation of the 13th Amendment of the Constitution and efforts by the Sri Lankan government to ensure that their own Tamil-speaking citizens live a life of dignity and of fairness. I'll be open to a discussion about role of Indian diaspora if there would be a suggestion. We'll structure it. Question number 47, Shri Sandeep Kumar Pathak. Honorable Minister. First supplementary, Shri Sandeep Kumar Pathak.
it will function. Both the honorable minister and the member are techno savvy. Thank you, They sir. know sometimes situations थैंक यू develop. सर. Go ahead. सर जैसा आप देखते हैं कि जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पराली जलाने की बात आती है और किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि देश में कोई भी किसान पराली खुद से नहीं जलाना चाहता है. जब वो पराली जलाता है तो सबसे पहले नुकसान तो उसको स्वयं को और उसको परिवार को होता है. तो इस इशू को एड्रेस करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है. मेरा प्रश्न ये है सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि पराली को ना जलाने के लिए जो कॉम्पनसेशन देनी बहुत जरूरी है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं. पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है कि प्रति एकड़ पराली ना जलाने के लिए 1000 रुपए कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार से मांगा है कि 1500 रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर एड ऑन कर दे तो ये पर्याप्त राशि होगी और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा. तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पे क्या प्रयास है, ये मेरा पहला प्रश्न. माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया है. इस विशेष अनुदान के अंतर्गत पराली को रोटिवेटर से लगाने के लिए मशीनें दी गई, पराली को रोकने के लिए अन्य कमर्शियल उपाय दिए गए. मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी पराली को जलाने में गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई, उतनी संतोषजनक प्रगति पंजाब राज्य में नहीं आई. मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के दिए गए संसाधनों का जो पूरी तरीके से उपयोग करना था, अगर वो होता तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते जितनी बाकी राज्यों में देखी. सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संदीप कुमार पाठक. Thank you, sir. So although the first answer is not satisfactory, but I would move on to my next question. Sir, पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पैरामीटर है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक तो एमएसपी है, क्या किसान को पर्याप्त एमएसपी मिलती है, और अगर उस फसल पर एमएसपी मिलती है तो पैडी जो धान है उसके एमएसपी में कितना डिफरेंस है. पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है केंद्र सरकार को कि जो एमएसपी में डिफरेंस है धान में और बाकी के फसलों में, वो अपने पंजाब सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेट करेंगे और एमएसपी देंगे. केंद्र सरकार क्या इसके लिए तैयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार है? माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही स्कीम लागू की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2440 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज किया गया है. उसके साथ ही साथ सीपीसीबी ने एक नई फाइनेंशियल स्कीम को भी लागू किया, जिसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जिसमें पैडी का पिलेट बना करके उसके कमर्शियल उपयोग को मान्यता दी गई. उसके अतिरिक्त भी सीपीसीबी के द्वारा अन्य फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके संबंध में दी गई. फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसका जो थर्मल पावर में भी उपयोग करने के लिए पिलेट्स बनाने के लिए उपयोग किया गया. मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, उसमें पिछले 2 वर्षों की तुलना में हम काफी पराली को जलाने में गिरावट को देख रहे हैं. मुझे लगता है इन सारे प्रयासों को अगर अच्छे तरीके से लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और पंजाब में भी विशेष रूप से ये दुर्भाग्य का विषय रहा कि सबसे ज्यादा जलाने की घटनाएं संगरूर में हुई, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है. थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जयराम रमेश. Sir, air pollution is now a serious problem across the country, not just in and around Delhi. I'd like to ask the Honorable Minister, the law for preventing and control of air pollution was passed in 1981. The national ambient air quality standards were set in 2009. I would like to ask the Honorable Minister, in view of the accumulating evidence on public health of air pollution, whether he will consider reviewing both the law passed in 81 and the ambient air quality standards that were set in 2009. Honorable Minister. देश में जो वायु का जो प्रदूषण है उसकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19,711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और जो मानक तय किए थे
उन मानकों को डिफाइन करने के लिए देश में 131 शहरों को चिन्हित भी किया गया। इन शहरों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम लगाई गई। विशेष रूप से PM 2.5, PM 10 में जो हवा में विषैली जो विकिरण फैलते हैं, उसको देखते हुए भी सारे प्रावधानों को किया गया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 131 शहरों में जो मानक बनाए गए थे, उसमें काफी संतोषजनक रूप से प्रगति की गई। बल्कि मैं माननीय जयराम रमेश जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन 131 शहरों में जिन म्यूनिसिपैलिटीज ने अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूशन किया, उनको भी पॉजिटिव तरीके से अवार्ड देने का काम किया, क्योंकि ये विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय, और इसमें विशेष रूप से जो स्थानीय नगर पालिका है, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे सहभाग करे, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको विशेष कंपनसेशन भी दिया गया। For supplementary, Sri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, one of the main reasons for air pollution is plastic, sir. And, of course, many serious efforts have been taken up. The torrential rain that poured in Chennai for the past 4 days, which is unprecedented, has stopped. But receding is very, very slow, only because of the major reason 25% is by way of the plastic waste that has been subbing here and there. And whenever we visit some hotels for a meeting, we see only they supply water in plastic bottles. Only in some hotels it's being supplied in glass bottles, and so also in festivals like marriage and receptions. So I would request the Honorable Minister, would you consider of giving strict guidelines that only glass bottles or only recyclable bottles could be given in various places for supplying water, and non-recyclable plastic bottles should be banned. And it's very, very essential, sir, because wildlife, many animals also die only because of consuming plastic. So that has to be seriously considered, and would the minister consider it and give a suggestion? Thank you very much. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सही सुझाव है। सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे देश के अंतर्गत हमने पूरी तरीके से बैन किया है, और इसको लागू करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को दी गई है। उसके साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें भी कई बार जो प्लास्टिक वगैरह जो जलता है, उसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। हमने पर्याप्त गाइडलाइन इसमें इशू करी है, और हम राज्य सरकारों से और स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, उसको पूरी तरीके से लागू करें, और जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा है कि इसमें अपनी जनभागीदारी को भी बढ़ाएं। श्री मुकुल वासनिक। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है कि सरकार वो कौन से कदम उठा रही है जिससे वातावरण में प्रदूषण कम होगा। अब दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन हाल ही में हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ कार्यालयों को बंद करना पड़ा, और एक लंबे समय तक के स्कूल्स को यहाँ दिल्ली में छुट्टी देनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इस हद तक के बढ़ गया था कि सामान्य जन बाहर में दिल्ली के वातावरण में नहीं चल सकते थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ऐसे कौन से कदम उठाएंगी ताकि आने वाले समय में दिल्ली के कार्यालय, दिल्ली की स्कूल्स वातावरण के प्रदूषण की वजह से बंद नहीं करने पड़ेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो फैलने का कारण है, उसका एक बड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डस्ट, ये जो चारों विषयों से पॉल्यूशन होता है, और उसके साथ जो स्टबल बर्निंग है, उसके कारण भी ये कॉज बनता है। हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल है उसको हमने चेंज किया है। जो डस्ट पॉल्यूशन है उसके लिए हमने पर्याप्त गाइडलाइन निकाली है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए भी हम जो है
गैस आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से एनसीआर में हमने प्रावधान किए हैं। और मैंने अपने पूर्व के उत्तर में स्टबल बर्निंग के लिए जो केंद्र सरकार ने राशि एनसीआर के क्षेत्र में आवंटित करी है उसका उल्लेख किया है। इन सारे प्रावधानों को उत्तर में भी विस्तार से दिया। क्वेश्चन नंबर 48, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखें। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या बढ़ते पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने हेतु कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को पर्यटन के रोजगारों से जोड़ा जा सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय चेयरमैन साहब, आज भारत में टूरिज्म दृष्टिकोण से भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलके अलग अलग कदम उठा रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए जो क्वेश्चन में पूछे हैं उसमें रूरल होम स्टेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर अलग अलग प्रांतों में, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में और अलग अलग स्टेटों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हुए होम स्टेट्स बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आपको मालूम है, मैं इस सभा को बताते हुए खुशी होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अभी तय किया है एक एक सेल्फ ग्रुप को मैक्सिमम जो डिफॉल्टर रहते हैं उसको 20 लाख रुपीस देने के लिए हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ने निर्णय किया। बैंक सुविधा पहला 5 लाख थे, 10 लाख, अभी 20 लाख एकदम बढ़ा दिया गया। उसके कारण से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं होम स्टेज बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ जो भारत सरकार के द्वारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के द्वारा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम फीमेल टूर गाइड्स को भी ट्रेनिंग दे रहे। उसमें जो फीस वसूल करते हैं महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट देते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आदेश पर हम सभी जगह हजारों महिलाओं को इस जो टूरिस्ट गाइड्स के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं इस सदन को, अभी प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी के विजन पर हम हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हाई स्कूल से लेके पीजी तक सभी इंस्टीट्यूशन में युवा टूरिज्म क्लब्स खोलने का निर्णय किया है। अभी तक 35,000 युवा टूरिज्म क्लब्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भारत सरकार खोले हैं। क्योंकि आपको मालूम है, घर में अगर कोई समर में, हॉलिडे में टूरिज्म जाना चाहते तो कौन तय करते हैं? घर में रहने वाले स्टूडेंट्स, बच्चे तय करते हैं। इसलिए भारत सरकार चाहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाने में उस बच्चों को आधार पर उस घर में, उसके परिवार में, उसके इंस्टीट्यूशंस में जो उनको अवेयरनेस लाने के लिए युवा टूरिज्म क्लब्स खोल रहे। अभी तक 35,000 युवा टूरिज्म क्लब खोलकर आज टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्रयास करें। हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार संपर्क करें। सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक युवा टूरिज्म क्लब जरूर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में क्या क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद आज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट में जब तक टूरिज्म आना चाहते हैं, एयरपोर्ट्स नहीं थे, पहले एयरपोर्ट्स कम थे, रेलवे स्टेशन एक ही असम गुवाहाटी में था। अभी सभी कैपिटल में एक ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहते हैं टूरिज्म बढ़ते नहीं। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार लगातार नॉर्थ ईस्ट में इस 9 साल में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाया। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं बढ़ते हैं, जब तक टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ते नहीं। अभी अभी हम जो नॉर्थ ईस्ट में जो नेशनल हाईवेज रहते हैं उसमें हम जो व्यू पॉइंट्स बोलकर
अलग अलग जगह व्यू पॉइंट से लगा रहे, क्योंकि बहुत डिस्टेंस जर्नी करना पड़ता है। टूरिज्म जाते हैं, महिला रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कोई वॉशरूम भी नहीं रहते। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग जगह व्यू पॉइंट से लगा रहे। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते फर्स्ट फेज में अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, सिक्किम में अलग अलग जगह नेशनल हाईवेज के बाजू अच्छे व्यू पॉइंट्स आजकल उधर ठहर सकते हैं। कैंटीन, रेस्टोरेंट, उसके साथ साथ कोई सावनीर सेंटर, उसके बाद अच्छे फोटोज सेल्फी निकालने के लिए अच्छी व्यू पर एक व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए अच्छे व्यवस्था करें। और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर अलग अलग जगह जो जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे। प्रसाद स्कीम के द्वारा, स्वदेशी दर्शन के स्कीम के द्वारा, पिलग्रिम टूरिज्म हो, नेचुरल टूरिज्म हो, ऐसे अलग अलग जगह टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार का प्रथम रेस्पॉन्सिबिलिटी है और प्राथमिकता देकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करें। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, recently, the Orissa government handed over 20 wayside amenity centers and 12 cafeterias at prominent tourist destinations to self-help groups under the Mission Shakti program of the state government of our Chief Minister, Honorable Sri Naveen Patnaik. Whether the central government would consider having similar kind of scheme, which would not only promote tourism, but would also give impetus to the self-help groups in the country. Honorable Minister. अध्यक्ष जी, टूरिज्म तो जो भारत सरकार को कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सभी डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को 100% हम प्रसाद स्कीम के द्वारा, स्वदेशी दर्शन के स्कीम के द्वारा हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अभी बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हम उनके द्वारा भी एंकरेजमेंट करने के लिए प्रयास करें। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को आते हैं, स्वदेशी दर्शन हो, प्रसाद स्कीम हो, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर प्रायोरिटी भी स्टेट गवर्नमेंट तय करते हैं। हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं 100%। उसका एग्जीक्यूशन हो, मेंटेनेंस हो, टेंडर हो, वो सब स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट से जो भी प्रपोजल आएगा जरूर हम करेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री सुखेंदु शेखर रे। Thank you, sir. Sir, the Sagar Island, situated in the South 24 Pargana district of West Bengal, popularly known as Ganga Sagar, is not only having a beautiful sea beach and coastal area, but also one of the most popular place of pilgrimage in the country from time immemorial. My supplementary to 48C, whether the Honorable Minister will be pleased to consider inclusion of Ganga Sagar under the Darshan or Prasad scheme for development of the place as spiritual circuit or coastal circuit. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद जो पिलग्रिमेज टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो, जो कल्चर टूरिज्म हो, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। एग्जाम्पल आप वाराणसी देख सकते हैं, उज्जैनी देख सकते हैं, केदारनाथ साहिब देख सकते हैं, वैसे ही साउथ में भी अलग अलग जगह श्रीशैलम में देख सकते हैं। सभी जगह प्रसाद के स्कीम के द्वारा उस अलग अलग जो पिलग्रिमेज सेंटर्स है, उस सेंटर्स में अम्यूनिटीज, टूरिस्ट अम्यूनिटीज बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं। और जो आप प्रपोज दिया है, जरूर स्टेट गवर्नमेंट से अगर प्रपोजल है तो जरूर हम फाइनेंस देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जो डोमेस्टिक टूरिज्म अगर कंपेरेटिवली 2021 से कंपेयर किए तो लगभग 155% 2022 में टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ गई। लगभग 173 करोड़ विजिट्स डोमेस्टिक टूरिज्म के आज लोग घुमाए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, फॉरेन टूरिस्ट भी 2022 में 85 लाख का आज कंप्लीट किया है।
महीने में। एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी 11 महीने में 2023 में इस महीने में जब लगभग नवंबर तक 2 करोड़, एक ही जम्मू कश्मीर का ही 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट किया है। इतिहास में आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने टूरिस्ट कभी नहीं आए। अब आर्टिकल 370 के हटाने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर स्टार्ट किया है। अभी उसके कारण 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में है। भारत सरकार हर विषय पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए आधार पर सबसे भारत का एम्बेसडर दूसरा कोई नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भारत का एम्बेसडर टूरिज्म बढ़ाने के लिए। जो भी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, हर मीटिंग में टूरिज्म के बात करते हुए जरूर लोगों को भारत का टूरिज्म का इंपॉर्टेंस अवगत करते हैं। G20 का आपको मालूम है, G20 का लगभग 200 मीटिंग 56 सिटीज में हुआ है। उस जगह अलग अलग देशों का ऑर्डिनरी डेलीगेट्स नहीं है, उस देश का इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हो और मिनिस्ट्री हो, ऑल इंपॉर्टेंट क्रीम ऑफ द 20 कंट्रीज हो, 30 कंट्रीज का ऑफिसर्स आए थे। उसको इतना प्रयास किया भारत सरकार टूरिज्म बढ़ाने के लिए। G20 के कारण सबसे बड़ा कोई फायदा हुआ तो भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म भी एक सेक्टर है, उसका बहुत फायदा हुआ है। वो दुनिया भर में जाकर घर अपना एम्बेसडर बनकर अपना अपने देश में भारत के टूरिज्म के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में अपना अपने देश में प्रयास करें। ये भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि टूरिज्म सेक्टर का है। Fifth supplementary, Shri Santosh Kumar P. Chairman, sir, it's a universal truth that the state of Kerala is one of the outstanding destinations of tourism in the world. But unfortunately, large areas of Kerala is still unexplored. So I would like to ask the minister, there are huge possibilities of pilgrimage tourism as well. So will there be any initiative from the side of the central government to promote tourism in Kerala by investing more funds, by starting more hotels through ITC and through this tourism promotion, and by increasing the air connectivity to Kerala, especially the northern side of Kerala, including Kannur Airport? So will there be any initiative to promote tourism through these channels? Honorable Minister. सरकार के तरफ से कोई नया होटल हम नहीं खोलेंगे, हम होटल बिजनेस करने वाले नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आने वाले दिन में अलग जगह स्टार होटल हो, बिजनेस बजट होटल हो, सभी जगह हम होटल बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करें। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे और लैंड दे, उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स करना है स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके हर जगह इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट जोन में भी अलग अलग जगह, नॉर्थ ईस्ट में अच्छे होटल नहीं थे, ऑल अभी 8 स्टेटों में होटल्स खोलने का प्रयास किया है। केरला में भी बहुत बड़ा होटल जो 3 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो, अलग अलग जगह नॉर्थ ईस्ट में भी है। मैं बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में पिलग्रिम्स के दृष्टिकोण से, गुरुवायूर टेम्पल के दृष्टिकोण पे हम लगभग 45 करोड़ उधर इंफ्रास्ट्रक्चर के केरला में दिया है। केरला में इको टूरिज्म हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, अलग अलग जगह हम क्रूज टूरिज्म हो, बहुत जगह हम पैसे दिया है। मैं आपको डिटेल बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास केरला का, जो हम पैसे भारत सरकार के द्वारा दिया गया, मैं आपको इस लिस्ट को मैं आपको पहुंचाता हूं। श्रीमती वंदना चौहान. 59, sir. Honorable Minister. First supplementary, Srimati Vandana Chauhan. Chairman, sir, the minister has given a comprehensive reply to my question, and it is heartening to know that the ministry is cognizant of a very disheartening fact or a finding of the IIT Mumbai that suggests that there is a rapid increase in soil erosion in the Western Ghats. This report has said that their study is based on remote sensing data. And they have in the report itself incorporated and the reply, the ministry has acknowledged this, that this data might have some methodological shortcomings, and they have expressed that the said findings need to be validated based on physical observations. So I think the physical observations need to be done by the government. And therefore, considering the fact
that there have been several landslides in the state of Maharashtra, in Kerala. I don't know about the other states, but very much in Maharashtra, where villages have absolutely been buried under the debris and soil. Would the minister consider that this needs to be taken up with right earnest and validation of this report needs to be done? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न उठाया है वो उसका कंसर्न है, क्योंकि वेस्टर्न घाट भारत के इकोलॉजी के लिए काफी इम्पोर्टेंट एरिया है और लगभग 16,000 स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए क्षेत्र में देश की 4,000 से ज्यादा हमारी प्लांट वैरायटीज हैं, जो लगभग कंट्री का 27% है। उसके अलावा ट्रीज की भी और बाकी स्पीशीज भी काफी ज्यादा है। वेस्टर्न घाट में जो सॉइल इरोजन हो रहे हैं, सॉइल इरोजन के जो कारण हैं वो निश्चित रूप से लैंड यूज एक बहुत बड़ा कारण है, माइनिंग एक बड़ा कारण है, उसके साथ हमारे जो वाटर रिसोर्सेस और बाकी जो अन्य एक्टिविटी है उसके कारण लगातार भूमि का क्षरण हो रहा है। मंत्रालय द्वारा इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन से लेकर के इको सेंसिटिव एरिया के प्रोटेक्शन को लेकर के चला रहे हैं। हम ये जानते हैं कि लगातार पेड़ों के कटने के कारण भूमि का लगातार क्षरण होता है और वेस्टर्न घाट में उसको प्रिजर्व करना, बचाना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में COP28 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रीन फंड इनिशिएटिव किया है और इसके अंतर्गत भारत में हमने उन क्षेत्रों की पहचान करी है जहां इस तरीके से सघन वन के इलाके, जहां पर भूमि को लगातार फ्रेगमेंटेशन हो रही है, खाली हो रही है या पेड़ नहीं है, वहां पर ग्रीन इनिशिएटिव के द्वारा ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग वृक्षारोपण को करके एक जन भागीदारी को और सबको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को बचाना ये महत्वपूर्ण है और इकोलॉजी के लिए वहां का जो बाकी भी जो एरिया है, विशेष रूप से जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसको सरकार बचाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। Second supplementary, Srimati Vandana Chauhan. Sir, the minister has rightly said that it is a very, very important eco-sensitive zone which needs to be preserved for several reasons: biodiversity, the hydrology, the geography, the monsoons that we get, and therefore it's very important that we pay attention. And therefore, rightly, the government from time to time set up two committees. One was in 2010, which was headed by Professor Madhav Gadgil. And later, there were some problems, and therefore, to give a holistic view to this issue, another committee was set up in 2012, headed by Dr. K. Kasturi Rangan. So both these committees have made recommendations. And after that, from time to time, from 2014, we have been the government has been coming up with only draft notification for the reservation of an eco-sensitive zone. Now, this is the 5th time that a draft notification has been taken Your up. supplementary. So when does this see the light of the day? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इशू किया गया था। क्योंकि इसमें गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, कुल मिलाकर 6 राज्य इसके अंतर्गत, उनकी भूमि इसके अंतर्गत आती है। पिछले वर्ष भी सभी राज्य सरकारों के साथ 1-to-1 मैंने स्वयं जाकर के मंत्रियों के साथ बातचीत करी थी। हमें बहुत सारे राज्यों के सांसदों के भी विशेष आवेदन आए थे, केरल के भी सांसदों के आए थे और उसके लिए हमने जो फॉर्मर डीजी हैं संजय कुमार जी, उनके नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई है ताकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद जिन गाँव की ग्राउंड लेवल पे समस्या उनको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा सके। मैं मानता हूं कि वो कमेटी संतोषजनक तरीके से काम कर रही है और हमें भी उस कमेटी के जो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने असेसमेंट किया उसके निर्णय की प्रतीक्षा है। Third supplementary, Shri V. Vijay Sai Reddy. Question 49, Sir. third supplementary. Sir, does the question number 49, sir? Does the government plan to conduct geoscientific mapping in respect of Western Ghats forests? And afforestation and plantation programs of the Forest Department have had a limited success.
due to reasons like neglect of local ecosystem, lack of assessment mechanism, and lack of planning, how is the ministry going to deal with the same and prevent the soil erosion? Thank you. Honorable Minister. सभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे की बात है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर नियमित रूप से हमारा फॉरेस्ट सर्वे होता है। अभी पिछले वर्ष ही भारत के फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसको करता है। हर 2 वर्ष बाद साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया जाता है और उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में एक बहुत एस्टेब्लिश हमारा डिपार्टमेंट है जो इसका नियमित रूप से संज्ञान लेके वार्षिक सर्वे करके उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। Fourth supplementary, Dr. Shantanu Sen. Thank you for giving me the scope. Sir, as we know that the tigers are going to be gradually extinct, and sometimes they are coming out of the forest because of severe deforestation at different parts of the country. Through you, my humble submission and my question to our learned minister, whether our government is going to take any special step to prevent this severe deforestation across the country. Thank you very much. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, बल्कि 50 ईयर ऑफ टाइगर की जो रिपोर्ट आई है, भारत में टाइगर की संख्या बढ़ी है और दुनिया के 70% टाइगर हमारे पास है। दूसरा, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने 53 टाइगर रिजर्व इस समय पूरे देश में है। उसके साथ ही एलिफेंट रिजर्व भी 33 है। भारत वाइल्ड लाइफ के प्रति कितना जागरूक है, इसको लेकर जब 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने बिग कैट अलायंस बनाया है। बिग कैट अलायंस में जो 7 बड़े जानवर है, उसमें से 5 भारत में ही है। भारत ने बल्कि चीता रीइंट्रोडक्शन करके जो प्रजाति हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए उसको भी वापस लाने का काम किया है। हमारे फॉरेस्ट के लोग उसके लिए भी लग रहे हैं और इसलिए भारत टाइगर कंजर्वेशन के मामले में, एलिफेंट कंजर्वेशन के मामले में दुनिया में गौरव के साथ कह सकता है कि भारत ने बचाने का और संरक्षण करने का कार्य किया। Fifth supplementary, Dr. V. Shivadasan. The single-use plastic is polluting the soil and environment. Sir, government is issuing a lot of directions to protect the soil and environment to avoid the plastic waste. But the question is, sir, inspire the people. So government should follow the directions very positively. So my question is whether government is ready to follow the green protocol for the government functions like parliamentary committees and official functions of the government to avoid this single-use plastic waste. Honorable Minister. निश्चित रूप से काफी जगह पे किया जा रहा है। आजकल काफी कॉन्फ्रेंस वगैरह में आप जाएंगे तो लगभग प्लास्टिक की बोतल गायब हो गई है। हमको भी सांसदों को सबको आग्रह करना चाहिए जिन कार्यक्रमों में हम भाग लें, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक ये सबसे बड़ी समस्या है, सॉइल इरोजन के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने पर्याप्त गाइडलाइन निकाली है, लेकिन इसके लिए जागृति करना हम सांसदों की भी जिम्मेदारी है। Question number 50, Shri Shakti Singh Gohil. Thank you, Chairman Sir. My question number 50. Honorable Minister. सभा पटल पर रखा गया। First supplementary, Shri Shakti Singh Gohil. माननीय सभापति महोदय, ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से आता है तो न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। और ये भी कहा जाता है कि जुडिशियल प्रोसेस इज द बिगेस्ट जुडिशियल पनिशमेंट। तारीख पे तारीख लोग परेशान होते हैं और ये क्यों होता है? मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाईकोर्ट के जजेस की वो 1124 है, उसमें से 324 जगह माननीय सभापति महोदय खाली है। माने 29% से ज्यादा हाईकोर्ट में अगर जजेस खाली है तो फिर जस्टिस डिलेड ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी बहुत सोच समझ के 3 जजेस के जजमेंट के बाद एमओपी बना है।
एमओपी के हिसाब से और हमारे संविधान के आर्टिकल 224 के हिसाब से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सरकार का रोल ही नहीं है इसमें खास। आपके वहां प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट से भेजे हुए आप क्यों रोक के रखते हो, क्यों इसको आप दबा के रखते हो, और इससे इतनी जगह खाली है तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप हटाना चाहती है या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, ये क्वेश्चन जो है वो जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंसी से संबंधित है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है उनका जिक्र करता हूं। पहले 34 स्ट्रेंथ है और 34 ही भरी हुई है। 34 ही भरी हुई है। और पहले नहीं दोनों है, दोनों आप मुझे जवाब देने दीजिए। और पहले सभापति महोदय, पहले ये स्ट्रेंथ भी 31 थी। ये मोदी जी की गवर्नमेंट ने 34 की और 34 ही भरी हुई है सर सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि 1114 ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ये हाई कोर्ट जजेस की। मैं यूपीए की बात करूं सभापति महोदय, तो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 906 थी सर। इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ भी 906 थी। हमने इनकी सैंक्शन हाई कोर्ट जजेस की भी सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाई और 1114। और अब बताता हूं कि जो हमने भरी है वैकेंसी, वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम स्टॉक लें। सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। एक देखिए ऑनरेबल मिनिस्टर सभापति, वो हाई कोर्ट के जजेस। एक सेकंड या ठीक, one second. Would you kindly take your seat? Would you take your seat first? Would you take your seat? Honorable member, when a member asks a question, I give full latitude. In making your inquiry, you did give a speech, raised a point, fine. I do not get into the contours whether it really fits into the frame. Honorable Minister is taking his own time, let him. Ultimately, there will be other supplementaries. Why don't you wait for that? I'm so happy that we are eliciting answers from the government. Things are going very smoothly. Why should we interrupt? And why should senior members interrupt? Let the Honorable Minister say. Honorable Minister. थैंक यू सर। सर मैं यही बता रहा था, ये यूपीए में क्या था ये सुनना नहीं चाहते, ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि अभी 1114 में से 790 वर्किंग है और 234 वैकेंट, यही मैं बता रहा था आगे। उसके बाद जो मैं आपको अगर स्टॉक लूं 1 जनवरी 23 का, तो हमें विभिन्न हाई कोर्ट्स कॉलेजियम से जो प्रपोजल प्राप्त हुए वो 171 और 2023 में जो हमें मिले वो 121। हमें प्रपोजल तो कॉलेजियम से ही मिलेंगे ना साहब। और अगर टोटल देखें तो ये हमारे पास प्रपोजल 292 हमारे पास पेंडिंग, उसमें से हमने अपॉइंटमेंट किया 110 का, अपॉइंटमेंट किया 110 का, सुनिए तो सही, रेमिट किया 60 का और 122 प्रोसेस में है। सर ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक इसको आप सहयोगात्मक प्रक्रिया कह दीजिए, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और हमने आपको मैं बताना चाहता हूं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है जजेस की। अगर वैकेंसी हुई है तो उसको जल्दी भी भरा है। अभी 3 जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो आप देखेंगे कि हमने बहुत जल्दी रिकॉर्ड समय में भर दिया है। मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहता हूं। मैं अब चूंकि शक्ति सिंह जी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो एक चीज बता ही देता हूं इनको। अगर हम 2004 और 14 से बात करें, जो हाईकोर्ट जजेस की बात कर रहे हैं ये, तो 86 एवरेज अपॉइंटमेंट मेड इन एरिया 86 और हम 100 कर रहे हैं, तो हम तो ज्यादा ही कर रहे हैं सर। आप चाहो तो ईयर वाइज डेटा दे सकता हूं, ईयर वाइज डेटा दे सकता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री शक्ति सिंह गोहिल।
सर आपका संरक्षण चाहता हूं। सवाल मेरा कुछ मिलेगा। और होता है, जवाब पूरा संरक्षण मुझे मिलेगा। विश्वास है, मुझे विश्वास है। सर मैं जनरली, सरकार होती है पार्टी की होती है, सरकार होती है वो अलायंस की होती है, पर यहाँ पे एक व्यक्ति की सरकार चल रही है, इसलिए मैं उसी हिसाब This से is expense. नहीं, सर मोदी सरकार कहते हैं, Because पार्टी की सरकार नहीं है। you are challenging the very basis of democracy. सर And सर you are doing it. सर ये हकीकत है, सर ये हकीकत है। हाँ, जो मंत्री खड़े होते हैं वो बीजेपी सरकार नहीं कहते, एनडीए सरकार नहीं कहते, मोदी सरकार कहते, तो मैं भी उसी लाइन में पूछना चाहता हूं। That are being ruled by one person, yes, sir, which yes, is a sir. government So by I will- one rule I will person. ask- I will Then ask- go to democratic process. Sir, you have Ask for enlightened supplementary, me. please. Sir, Ask for supplementary. Sir, I deeply obliged you Ask have for enlightened supplementary. me, and सर ऐसा है, इसी बात लाइन पे बहुत- मैं पूछना चाहता हूँ। बात बहुत दूर तक जाएगी, इसको बंद कीजिए सर, और प्रश्न पूछिए। सर It's an important issue. सर आपका स्नेह है, मैं आप भी जुडिशरी से, मैं भी जुडिशरी से, कोर्टों से जानता हूं, जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के दर्द अब को आप इसलिए माननीय मैं मंत्री जी से पूछिए। सर मेरा सवाल माननीय मंत्री जी सुनिए। हाँ, ऐसा यूपीए सरकार में कभी नहीं हुआ था, इसलिए आप जरा सुनिए, इसका जवाब ही नहीं। आप काइंडली लिसन सो दैट यू कैन, आपके जरिए सर। ये 7 नवंबर 2023 को व्यक्ति की सरकार होती है। इस मोदी जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा pick and choose approach to collegium proposal is not good. सुप्रीम कोर्ट को आपको 20 नवंबर को कहा कि प्रपोजल आती है, उसको आप स्प्लिट कर देते हो, पसंद वाले को दे देते हो। That is not true. Is it true or not? You put it on record. One second. नहीं है। One second, please. Take it. Mr. Shakti, 1 second. I would expect all the honorable members to maintain decorum. Mr. Shakti Singh Goyal, a member of this house, has made, you put authenticated judgment of the Supreme Court on record during course of the day. Go ahead. Authenticate. No, you will put the authenticate. You don't authenticate. You put the authenticated official judgment of the Supreme Court on record. Benches, you know very well, sir, what is bar and benches. Version from bar and benches. No, I'm so sorry. Is very clear. I'm so sorry. And that clear I'm clarity absolutely so sorry. That clarity this can't be allowed. I will give you. No, sir. There will be consequences emanating out of it. You will have to authenticate from authenticated record of the Supreme Court. Sir, we have highest regard for our judiciary. Sir, I cannot allow judiciary to be so reflected. Whether it is right or wrong. Let Minister reply that this was not told by the Supreme Court. This is my second supplementary. Ask your supplementary and comply with the directive. Whether this was told by Supreme Court or supplementary. Not, let Honorable Minister reply. Ask your supplementary. Ask your supplementary, Honorable Minister. And before that, let me tell honorable members, dealing with judiciary, a vital wing of our governance, we need to be extremely careful. Judiciary speaks through its judgments. During course of hearing, reflections emanate. They do not constitute judgment. Supreme Court has repeatedly indicated the purpose of those observations. If the honorable member has taken an observation to be judgment of the Supreme Court, I can say with my limited experience, he is totally in the wrong. A directive has been issued by me. He will comply during course of the day. Go ahead. Thank you, Chairman sir. मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, सर आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मैं नहीं देता उत्तर, आपको देना होता है माननीय मंत्री जी। स्पष्ट किया है, लेकिन संरक्षण इनका भी दिया, मेरा भी किया। संरक्षण डायरेक्शन दे दिया। संरक्षण जो है, संरक्षण आप इनका भी कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो, निष्पक्षता से काम करो। हमारा भी संरक्षण चाहिए ना। तो आपने अच्छा जो है अपनी बात कही, लेकिन मैं एक कहता हूं साहब, रनिंग कमेंट्री कुछ और होती है और डिसीजन में कुछ और होता है। अगर डिसीजन इनके पास है, माननीय सदस्य के पास,
तो वो ला करके पुटअप करे, डिसीजन है तो। आप रेस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चन। और दूसरा इनका क्वेश्चन था एमओपी को लेकर के। एमओपी को लेकर के जो प्रश्न था, एमओपी के लिए हमने 6 जनवरी 23 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष रखा है। द मैटर इज पेंडिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रेस्पॉन्स इज अवेटेड एमओपी के मामले में। थैंक यू। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री NR Ilango. Thank you, Chairman. There is a very strong perception among the stakeholders that the government is not clearing the names of the advocates, which are cleared by the collegium only on the basis of their political ideologies or views. I request the Honorable Minister to clarify what are the steps taken by this government to dispel such perception among the stakeholders. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. Sir, I have already stated that there is a collaborative process between the executive and judiciary. और जुडिशरी की जो निष्पक्षता है, इंडिपेंडेंसी है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये प्रोसेस में जो समय लग रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन हाई कोर्ट से नाम आते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमें कुछ सजेस्ट करता है, कुछ हम उनको सजेस्ट करते हैं। ये विषय ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस में जो समय लगता है वो एमओपी का पार्ट जो मैंने अभी जिक्र किया। थैंक यू। श्री सस्मित पात्रा. Sir, thank you for giving me this opportunity. Firstly, sir, I'd like to commend the Honorable Minister that there are no vacancies in the Honorable Supreme Court. And also the ministry has given information that in this year, 292 proposals have come from the High Court collegiums, and they were under process of various considerations. And it seems that at times the number of proposals expected from High Court collegiums are not as much. Now, that is not the responsibility of the ministry. That is up to the High Court collegiums to take a call on, along with the Supreme Court collegiums, in order to fill up the vacancies. My specific question to the Honorable Minister would be, though it does not come within the domain of the ministry to expedite something between the High Court collegiums and the Supreme Court collegium, would the ministry consider engaging with either the process or through the ministry with the High Court collegiums and the Supreme Court collegium? You ran out of time. Sir. You can see the Honorable Minister in his chamber. Sir. The House will meet at 2 p.m. today.